Dear students, as you know that chi-square test may be used to test the equality of several proportions. So in this module, I'll be giving you the demonstration on a contingency table of rows versus column. So that is being given in form of a row versus column, and we are going to test the equality of several proportions by taking a practical example. The problem in hand is that an insurance company wants to test whether the proportion of people who submit claims for automobile accidents is about the same for the three age groups: 25 and under, over 25, and under 50, and 50 and over. So we are required to test the claim at 1% level of significance. So students, here alpha is being given as 0.01. Now as you can see that the table of row versus column is being given. So students, इसमें आपको दो कैटेगरीज दी हुई हैं, रोज में भी दी हुई है और कॉलम्स में भी. रो में दिए हुए हैं claim of the people, the ones who have made the claims and the others who did not make any kind of claim. Or students, columns में you are being given as three categories: 25 and under, the ones for which the age is lying between 25 and 50, and for the age group 50 and over. Now as you can see that observed frequencies are given under this table, and the next step we would have to do is to find out the expected frequencies. So students, we are going to determine the testing procedure. The null hypothesis here is that age groups are homogeneous or same with respect to the claims being made, whereas the alternative statement is that age groups are not homogeneous with respect to the claims. Level of significance is alpha, which is being given as 0.01. Step number 3 is the formula we are going to use under test statistic, and that is chi-square, because we are talking about a contingency table of rows versus column. So chi-square is summation O minus E whole square divided by E, where O is the observed frequency and E is the expected frequency. So students, the first thing we would have to do is to find out the row totals and the column totals. So अगर आप 40 को ऐड करते हैं 35 में और उसको आप ऐड करते हैं 60 में, तो you are getting a value of 135. Similarly, you will be finding out the other row total. और column total के लिए 40 plus 60, that gives you 100. So once you have found out the row totals and the column totals, the next thing you would have to do is to find out the expected frequencies. So students, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप 40 के against 40, अब देखिए क्या है, the ones who are under the age of 25 and they have made the claim. So इस observed frequency का आप देखिए रो टोटल क्या है 135 और इसका कॉलम टोटल क्या है 100. आप 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे ग्रैंड टोटल के साथ, that is 300. Once you do that, the value will come out to be 45. So 45 is the required expected frequency against 40. Students, इसी तरह से आप बाकी भी find out करेंगे expected frequency. For example, if we are talking about the expected frequency against no claim and the age group is 50 and over, so आप क्या करेंगे? वो वैल्यू है 40 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसके अगेंस्ट आपका रो टोटल है 165, कॉलम टोटल है 100. सो 165 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों जो मल्टीप्लाई किए आपने नंबर, इनको डिवाइड करेंगे विद 300. सो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी 55. वंस वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, द नेक्स्ट थिंग इज टू अप्लाई द chi-square फॉर्मूला. सो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने क्या किया? ओज और ईज को लिख लिया. ओ जो 40 था उसके अगेंस्ट वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू की 45 थी, जो 35 ऑब्जर्व वैल्यू थी उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 45, एंड सो ऑन. अगेंस्ट 40 वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज 55. द नेक्स्ट कॉलम इज टू सब्ट्रैक्ट ओ फ्रॉम द ईज. देन इन ऑर्डर टू अप्लाई द chi-square, स्टूडेंट्स हमें ओ माइनस ई के होल स्क्वायर लेने हैं. तो वो मैंने यहाँ फाइंड किया है. 40 माइनस 45 इज 5. 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25. उसके बाद द लास्ट कॉलम इज कि आपने ये जो ओ माइनस ई स्क्वायर निकाले हैं थर्ड कॉलम में, इनको डिवाइड कर दें विद द करस्पॉन्डिंग expected frequency.
So 25 divided by 45, that gives you 0.556. इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने 100 को, जो नेक्स्ट वैल्यू है अंडर ओ माइनस ई होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है विद 45, तो आपको वैल्यू मिल रही है 2.2222. नाउ समिंग इसी तरह से आप फाइंड आउट करते जाएंगे ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई. समिंग ओवर दिस एंटायर कॉलम, ये आपने सम फाइंड किया है इस कॉलम का, that comes out to be, last column ka, that comes out to be 14.14. So this is the required value of the chi-square. So students, the calculated value comes out to be 14.14. Now the next step is to find out the critical region. Critical region बिल्कुल उसी तरह से find करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास rows और columns दोनों given है. So students, so आपका critical region will be chi-square greater than chi-square alpha r minus 1, c minus 1. And you remember that we have 2 rows and we have 3 columns. So इस r की जगह हमने डाला 2 और इस c की जगह हमने, जो कि columns है, हमने 3 डाला, और आपके पास alpha was 0.01. तो आपके पास tabulated value जो आपने find out करनी है chi-square 0.01 probability को आपने 2 degrees of freedom में देखना है. So students, again मैंने chi-square table use किया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर सेम 2, और इसको अब मुझे डिटरमिन करना है 0.01 में. देखिए ये है 0.01. सो 0.01 इज अ प्रोबेबिलिटी, 2 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इसके अगेंस्ट मुझे वैल्यू मिल चुकी है, क्रिटिकल वैल्यू 9.21. नाउ द लास्ट थिंग विल हैव टू डू इज टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू विद दैट ऑफ द tabulated value. So as the calculated value, that was 14.14, it is greater than the 9.21 that was a tabulated value we have obtained from the chi-square table. So we can say that it falls in the critical region, and we'll have to reject each knot and conclude that the groups are non-homogeneous with respect to the claims being made.